स्टार्ट करिए आज नो लेक्चर। लास्ट इन द लास्ट lecture we discuss about the different types of set and its property and some examples and exercise 1.2. Now today we discuss different sets, types of set, and one more important subset is subset. What is a subset? You all know that in the standard 10 or 9th, A subset B. Suppose A is a subset of set B. Compulsory all the elements of set A. All the elements of set A is also part of set B. That means all the elements of set A is also present in set B. For example, A is equals to 1, 2, 3, 4, 5. And another set B is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you notice that all the elements of set A, 1, 2, 3, 4, 5, is also a part of set B, is also present in set B. Therefore, you write A is subset of B. Again, I repeat, A subset B, compulsory, all the elements of set A is must present in another set B. Therefore, you write A subset B. I give one more example. C is equals to 1 and 2. 1 and 2. You notice that 1 and 2 is also present in capital A. Therefore, C subset of capital A. And 1 and 2 is also present in capital B also. Therefore, C is the subset of capital B. Right? Now we discuss definition. First read the definition. A set A is said to be subset of another set B if every element of A is also an element of B, is also part of another set B. Therefore, A subset B. Therefore, we write A subset B. Right? In the mathematical form, A subset B if any variable A is part of A, is part of capital A. So compulsory, which is also part of capital B. For example, 1 is a part of capital A. 1 is a part of capital A. Therefore, 1 is also part of B. 1 is also part of B. Therefore, you write A subset B. All the elements, check. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 members. 5 members which is also present in capital B. Therefore, I write A subset B. If not, if suppose A is equals to 1, 2, 3, 4, 15. 15 is part of A, but 15 is not part of B. 15 जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक मेंबर ये दिया हुआ है 15, तो वो क्या है 15 belongs to capital A, but 15 does not belongs to capital B. तो आप A सबसेट B ऐसा लिख नहीं सकते हो. तो उसको कैसे नोटेशन करेंगे? तो उसको हम लिख सकते हैं A नॉट सबसेट B. A क्या है? B का सबसेट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो 15 एलिमेंट्स है, ये जो 15 नंबर वाला जो मेंबर है वो A में है, कैपिटल A है,
बट कैपिटल बी में नहीं है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे वही डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, देख लो यहाँ पे। इफ ए सबसेट बी, if A subset B and B subset A, double implies A equals to B. Last lecture we studied about the equal set. If and only if number of element and member itself same, number of element and member are same, then and only then you say that the A and B both are equal set. But different way, if you prove that A and B both are same set, then you prove A subset B and B subset A, right? For example, A is equals to 1, 2, 3, 4, and B is equals to 3, 1, 2, 4. Let us check A subset B or not. All the elements of set A, 1, 2, 3, 4, which is also part of B, 3, 1, 2, 4. Therefore, this is correct. Another B subset A. Check 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4 is also part of capital A. Yes, therefore, this is also true. If A subset B and B subset A is true, then if these both conditions are true, then you said A equals to B. If A equals to B is true, then you write A subset B and B subset A. इसमें क्या दिया हुआ है, ये दोनों कंडीशन है। इफ जो A है, इफ A सबसेट B एंड B सबसेट A ये ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू B. If A equals to B, then you write A subset B and B subset A. क्लियर? तो आपको एक दूसरी डेफिनेशन मिली है कि दो सेट सेम है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आपको क्या प्रूव करना है, A सबसेट B एंड B सबसेट A, तो ऑटोमेटिकली A इक्वल्स टू B हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट में दिए हुए कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। That means if A equals to 1, 2, 3, 4, then check A subset A. Set A is also subset of itself. That means let us check A subset A. A का जो भी मेंबर है 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 में तो आएगा ही आएगा, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं, every set is a subset of itself. That means A subset A, B subset B, C subset C, ऐसा आप लिख सकते हो। Last one, the null set 5 is a subset of every set. क्यों? क्योंकि null set that means there is no member. Null set is a subset of every set. ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सेंटेंसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। every set is a subset of itself and null set is a subset of every set. Write down these two sentences. Now we discuss about the total number of subset. How many total number of subset are exist? Suppose A is equals to in set 1 and 2. Sorry, first we consider only 1. Then how many subset exist? Total subset of capital A. फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है,
सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट, तो मैं लिख दूंगा नल सेट, क्योंकि नल सेट है वो कोई भी जो सेट है उसका सबसेट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट सेट इटसेल्फ, तो ये दोनों आ गया। नेक्स्ट में क्या करना है, तो ये इसमें एक ही मेंबर है तो दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये जो ए सेट है उसका हमें सबसेट निकालना है, तो कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2, एंड विच वन, null set and set itself. Suppose B is equals to 1 and 2, मेरे को B is equals to 1 and 2 दिया हुआ है, तो मेरे को सबसेट निकालना है किसका, सेट B का। टोटल सबसेट ऑफ कैपिटल B। सबसे पहले नल सेट, नेक्स्ट सेट इटसेल्फ, नेक्स्ट सिंगलटन सेट 1। I use word singleton, that means if a set, any set is consist only one member, it's called singleton set. It's called singleton set. It's called singleton set. There is only one member exists. One is also part of capital B. That's why this set is a subset of capital B. Same thing, singleton set 2. This set is also contain one element. Which one? 2. 2 is also part of capital B. That's why this is also a subset of capital B. That means capital A has 2 subset, capital B has 4 subset. One more example. Suppose I have capital D is equals to X, Y and Z. Capital D is equals to X, Y and Z. Then find the total subset of capital D. क्या करना है, कैपिटल डी का टोटल सबसेट फाइंड करना है। फर्स्ट नल सेट, सेट इटसेल्फ, इसका सबसेट निकालना है, तो हमें सिंगलटन सेट एक्स, चेक करो, ए एक सेट है, उसमें कितने मेंबर है, 1 एक्स। ये जो एक्स है वो पार्ट ऑफ डी होना चाहिए, है यस। अनदर कैपिटल, सॉरी स्मॉल वाई, सिंगलटन सेट वाई, सिंगलटन सेट वाई, तो इसमें 1 मेंबर है वाई, तो वो क्या हो, पार्ट ऑफ डी होना चाहिए, यस। अनदर वन सिंगलटन सेट जेड, सिंगलटन सेट जेड। Next, I will pair with 2 x and y. X and y. This is also set. Set की definition read करो। इसको मैं टेबुलर फॉर्म में सेट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। x और y की लिस्ट बना दी, उसको कर्ली ब्रैकेट में रखा है, कॉमा से सेपरेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक सेट। How many members are there? There are 2 members. Every member is a part of another one. X and Y is also part of capital D. That's why this is subset of capital D. इसमें 2 मेंबर है, राइट? तो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसमें एक मेंबर है तो इसको बोल दिया सिंगलटन सेट, तो इसको क्या बोलेंगे, डबलटन सेट। तो ऐसा इन्वेंट नहीं करना है, इसको डबलटन सेट नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे इन सेट एक्स वाई, राइट? सेट एक्स वाई, एक्स वाई ही है, उसके मेंबर एक एक्स है और दूसरा वाई है। नेक्स्ट वाई और जेड, ये दोनों भी है मेंबर, तो वो
डी के पार्ट में है। नेक्स्ट मैं पेयर करूंगा एक्स और जेड का, देख लो एक्स और जेड, तो ये दोनों मेंबर है वो डी का पार्ट में आएगा, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डी। देर आर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देर आर 8 सबसेट एग्जिस्ट। अब बोलोगे सर मेरे को y और x का भी पेयर करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो y और x, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूं। देयर आर 8 मेंबर एग्जिस्ट। क्लियर? वन मोर इंपॉर्टेंट नोट्स, how many total subset exist? Write down one note. If any set has, if any set has n members, n elements, n members or n elements, then total number of subset, then total number of subset of set is 2 raised to n. If a set, any set has n members, small n members, then total number of subset of set is 2 raised to n. For example, any set has 4 members. If any set has 4 members, the notation is number of set A. Number of A. Read as a number of A. That means A has 4 members. Number of A equals to 4. Then total number of subset. Number of subset is 2 raised to n. That means 2 raised to 4. How many? There are 16 elements. 16 सबसेट आपको मिलेंगे। क्रॉस वेरीफाई करो। लास्ट हमारे पास 3 मेंबर्स थे, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू 3, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 3 इज इक्वल्स टू 8। तो हमें 8 ही मिला था, तो आप ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। एमसीक्यू में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट इफ सेट हैज सो एंड सो। वो आपको नंबर दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपके पास है, आपको क्या करना है? टोटल सबसेट फाइंड करना है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट। क्लियर? Let A and B are set, two set. If A subset B and A is not equals to B, A subset of B and A is not equals to B, then A is a proper subset. Again, new word, proper subset. Proper subset. MCQ में चेंज करेंगे, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सो एंड सो। कैसे फाइंड करना है देख लो। सपोज A is equals to given A, B, C, D. Find the number of proper subset. Find the number of proper subset. आपको पता है टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 रेस टू 1 2 3 4, 2 रेस टू 4।
How many? 16. But these 16 are called proper subset? No. One condition is left. Which one? A is not equals to B. ये जो 16 सबसेट है उसमें से एक जो सबसेट है वो आपका क्या होगा? कैपिटल ए. क्योंकि आप लिख सकते हो, क्या लिखते हो? फर्स्ट सबसेट इज नल सेट, सेकेंड सबसेट इज सेट इटसेल्फ. तो वो सेट इटसेल्फ है वो आपको रिमूव करना है. -1 इक्वल्स टू 15. दिस 15 इज अ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट. मैंने क्या कर दिया? 1 रिमूव कर दिया. क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि डेफिनेशन वही है. और डेफिनेशन सेज A is not equals to B, then A is called proper subset. तो मैंने 16 जो सबसेट निकाले थे उसमें से 1 जो सबसेट है वो क्या है? सेट इटसेल्फ है. तो वो मेरे को रिमूव करना पड़ेगा. तो इसीलिए there are 15 subset is called proper subset, right? In the general, write down one note. If any set has n elements or n members, then number of proper subset is equals to 2 raised to n minus 1. यहाँ पे देख लीजिए कैसे लिखना है. 2 raised to n minus 1, not 2 raised to minus 1. 2 raised to n minus 1. 16 minus 1, you got 15, which is your proper subset, number of proper subset. If a question like that, number of element is equals to 8. Suppose number of element is 66. Then proper subset, number of proper subset, 2 raised to 6 minus 1. 2 raised to 6, that means 64 minus 1, you got 63. This 63 number is proper subset of set A, right? And this 1, remove 1, is called improper subset. Is called improper. One more note. The number of any set, the number of improper set of any set is equals to 1, which is fixed. I repeat, the number of improper set of any set is equals to 1 and which is fixed. And last, if a set has only one element, it is called singleton set. एग्जाम्पल नंबर 9. सबसेट है क्या नहीं है वो आपको वेरीफाई करना है और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसा दिया हुआ है. नल सेट विच इज सबसेट ऑफ सेट ए सबसेट सी. चेक करो. ए 1 and 3 members, 1 and 3 is also part of C. Yes, this is subset. A and B, 1 and 3, 1, 5, 3. 3 belongs to A, but 3 does not belongs to B. Therefore, this is not subset, right? Solution. Extra questions. 9.1 extra question check કરો. જ્યારે પણ આ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન આવે ને બરાબર, તો ત્યારે તમારે સૌથી પહેલા એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાનું વ્યવસ્થિત, અને પછી આ એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ છે એ જાતે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવાની. બરાબર, જો આ એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ થઈ જાય સોલ્વ
તો તમારે સમજવાનું કે મને એક્ઝામ્પલ જે છે એ સમજાય છે. અધરવાઇઝ જો આ એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ જે છે આમાં થોડો પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો ફરી વખત એક્ઝામ્પલ જે આની પહેલાનો 9 જે છે એ થોડો રિવાઇઝ કરવો પડશે. નેક્સ્ટ example number 10. Example number 10, A is equals to AEIOU and B is equals to ABCD. Is A is a subset of B? If not, then clarification. Is B is a subset of A? If not, then also clarification. Here A is equals to A, E, I, O and U, and B is equals to A, B, C and D. Here you notice that E belongs to A. E belongs to A, but E does not belongs to B. E जो एलिमेंट्स है E, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ B, बट वो नहीं है, इसीलिए A सबसेट B नहीं है. तो क्या लिख सकते हैं? A is not subset of B. Same things, C belongs to B, but C does not belongs to A. Therefore, B subset A. B is not subset of A. B is not subset of A and A is also not subset of B. Extra question है. Next, example number 11. In the example number 11, given that there are 3 sets and A belongs to B and B subset of C. एक कंडीशन दी हुई है, तो आपको फाइंड करना है कि A सबसेट ऑफ C है क्या? A belongs to B. A belongs to B. Last time I wrote the one not. Belongs to साइन कंपल्सरी एलिमेंट्स और सेट के बीच में आएगा, तो दिस इज एलिमेंट and this is set. For example, A is equals to singleton set 1 and set B, right? Compulsory follow this condition. That means this A set is a member of set B. Therefore, B is equals to in the set 1, 2, 3. Again, one condition is given, B is a subset of C. Therefore, C is equals to in the singleton set 1, 2, 3 and 4. देख लो आप, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है. यहाँ पे A is equals to singleton set 1, B is equals to in the singleton set 1, 2 and 3, and C is equals to singleton set 1, 2, 3 and 4. You prove that the A subset B or not. 1 belongs to capital A. 1 belongs to capital A, but 1 does not belongs to capital C. 1 does not belongs to capital C. ये जो 1 है और ये 1, ये दोनों डिफरेंट है. This is only 1 and this is set 1. Therefore, 1 does not belongs to C. But in the set 1, which is also belongs to C, हमें क्या चाहिए? Only 1 चाहिए, not in the set 1. Therefore, definition says A belongs to 1
if any member belongs to set, compulsory this elements also present in second set. One belongs to A, but one does not belongs to C. Therefore you write A subset B, which is false. Therefore A does not subset of B. Clear? A is not a subset of B because one is a subset, one is a member of A, but one is not a member of C. Extra question. Example 11.1 extra question. सेट ए बी सी आर थ्री सेट. यहाँ पे कंडीशन ए सबसेट बी और यहाँ पे दिया हुआ है बी बिलोंग्स टू सी. राइट, बी बिलोंग्स टू सी. ए चेंज है तो आपको चेक करना है ए सबसेट सी है और नहीं है. एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन. पुट द सिंबल ऑफ सबसेट और not subset. In the first one 2 3 4, 2 3 4 which is also part of second one 2 3 4, therefore this is sign of subset. Second one A B C, A B C which is also part of second one. Let us check. A is a subset member of first one, but A is not present in second one, therefore this is not subset. X, where X is a student of 11th class in your school, and second set A is a student of your school. वो क्या बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है वो 11th क्लास में है और सेम थिंग स्टूडेंट इज योर स्कूल, तो आपकी स्कूल में है तो 11th में है ही, तो यहाँ पे क्या आएगा सबसेट. लास्ट वन X इज अ इवन नेचुरल नंबर. X क्या है? इवन नेचुरल नंबर है. 2 3 2 4 6 8 10 like that. And second set which is X, where X is an integer. Integer, that means 1 2 3 4 positive integer, 0 and -2 -4 -6 -8 like that negative integer, which is also subset. Therefore sign is subset because 2 4 6 8 which is also part of integer. इवन नेचुरल नंबर है उसको आप इंटीजर बोल सकते हो, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा सबसेट की साइन आएगी. सेकेंड क्वेश्चन. स्टेटमेंट इज फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन सेट A and B. In the set one, two members are given, A and B, which is also part of second one, A and B. So first one is a subset of second one. तो यहाँ पे सबसेट की साइन होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है is not subset. That means the first statement which is false. Second one E and A and E. X is a vowel in English alphabet. English alphabet आपको पता है A-E-I-O-U. A and E which is also English alphabet. That means यहाँ पे सबसेट की साइन होनी चाहिए और वही साइन है. That means the second statement which is true. In the fourth one, singleton set A, and यहाँ पे सेट में 3 एलिमेंट्स है A, B and C. That means all the elements of first one which is also present in second one, which is true. Therefore fourth is true. In the fifth one, singleton set A belongs to set A, B, C, which is true or false? Which is false, because of this is my element, because the sign is belongs to. If this fifth statement is true,
then singleton set A belongs to in the set singleton set A, comma B, comma C. This is my correct statement, right? This is my correct statement. And the last one, even natural number which is less than 6, which is less than 6, and x is a natural number which is divided by 6, तो सेम ही आएगा. Next, question number 3. In the question number 3, A is equals to 1, 2, in the set 3, 4 and 5. First, calculate the total elements. If 5, then calculate again. There are 4 members. 1, 2, this is 1 element, and 5. There are 1, 2, 3 and 5. 1, 2, 3 and 4. There are 4 members. 1, 2, this whole is a member of capital A. Therefore, I can write 1 belongs to A. You all know that 1 belongs to A. Member and element, sorry, member and set, in between belongs to sign, and set and set, in between two set there are sign of subset. 1 belongs to A, 2 belongs to A, 3 does not belongs to A, because there are no 3 element exist in the set A. 3 जो एलिमेंट्स है वो सेट ए में नहीं है. आप सोचोगे सर यहाँ पे तो 3 है, आप कैसे नहीं लिख सकते हो? यहाँ पे देखो 3 in the set, in the curly bracket 3 and 4 are exist. Therefore, in the curly bracket 3, 4 belongs to A. This is correct, right? Second, 5 belongs to A. This is also correct. 1, 2, 5, which is a subset of set A. Therefore, in this set 1, 2, 5, 1, 2, 5, which is member, in the curly bracket, which is convert into set, set and set. In between two set, there are sign of subset. Clear? In the curly bracket, write one member 3, 4. This is set and this is also set. In between two set, sign of subset. सबसेट की साइन आएगी. तो आपको एक कंडीशन है कि दो सेट है तो उसके बीच में सबसेट की साइन आएगी. एलिमेंट और सेट उसके बीच में क्या आएगा? बिलोंग्स टू की साइन. इन बिटवीन सेट एंड सेट देयर आर सबसेट, साइन ऑफ सबसेट, एंड एलिमेंट एंड सेट इन बिटवीन दिस टू साइन ऑफ बिलोंग्स टू. 3, 4, set 3, 4 ये सेट है, but in the set 3, 4 which is part of set A, that's why this is element and this is set. You know that element and set in between this sign of belongs to is exist. Therefore, this is false. First one is false. Member put into the curly bracket, convert into set, set and set. In between two set there are subset, sign of subset. That's why this is correct. 1, 2, 5 is a member of capital A. In between belongs to sign is not exist because this is set and this is also set. That's why यहाँ पे क्या आएगा? सबसेट की साइन आएगी, राइट? तो ए भी क्या है? फॉल्स है. नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट. नल सेट
ये जो नल सेट है वो ए का मेंबर नहीं है। सपोज यहाँ पे कॉमा करके मैं ऐसा 5 लिख दूंगा तो ये जो है क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। बट यहाँ पर नल सेट है वो मेंबर नहीं है ए का, इसीलिए जो नल सेट है वो बिलोंग्स टू ए नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो ये भी क्या है, गलत है। null set is a subset of A. Null set is a set of any set. That's why this is correct. This question 1, 2, 3 subset of A. 1 is a part of A, 2 is a part of A, but 3 is not part of A. I repeat, 3 and 4 does not belongs to A because 3 and 4 is not present in capital A. In the curly bracket 3, 4 which is present, but 3 and 4 which is not present. ફરી વખત હું કહું તમને, ઘણા આમાં કન્ફ્યુઝ થશો તમે. 3 અને 4 આમાં ઘણા એવું કહેશે સર 3 તો એ નો સભ્ય છે, એ નો મેમ્બર છે, તો તમે કેમ એવું કહો છો કે 3 does not belongs to A? I repeat, 3 અલગથી હોવો જોવે, એમાં સેપરેટથી હોવો જોવે મેમ્બર, પણ અહીંયા સેટની અંદર 3,4 છે, બરાબર? અહીંયા 3 અલગથી મેમ્બર હોવો જોવે, પણ 3 does not belongs to A, એટલે જ હું અહીંયા શરૂઆતમાં મેં લખ્યું છે કે 3 does not belongs to A. સેમ વસ્તુ હું એવું પણ લખી શકું કે 4 does not belongs to A. કેમ કે 3 અને 4 3 and 4 which is not part of A, ઈ એના મેમ્બર નથી. આ કર્લી બ્રેકેટમાં છે ઈ વાત સાચી, એટલે તો મેં એને મેમ્બર કીધો છે. જુઓ, કર્લી બ્રેકેટ 3,4 which is member, which is element of capital A, તો એટલે તો મેં belongs to સાઇન કરેલી છે. જો આ ક્વેશ્ચન વ્યવસ્થિત સમજાય હશો, આ થિયરી યાદ હશે થોડી, તો જ આ કરી શકશો. હજી હું મારું સ્ટેટમેન્ટ રિપીટ કરું કે કોઈ પણ બે સેટ હોય એની વચ્ચે કમ્પલસરી સબસેટની સાઇન આવશે. એલિમેન્ટ અને સેટ ઈ બંનેની વચ્ચે બિલોંગ્સ ટુ ની સાઇન આવશે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 4. In the question number 4, write down all the subset of the following singleton set A. How many members are exist? There are one members. There are one members. 2 raised to 1. There are two subset exist. Which one? Null set and set itself. There are two members exist, A and B. 2 raised to 2. There are 4 subset exist. Which one? Null set, set itself, singleton set 1 and singleton set B. Singleton set A, singleton set B. 3, 1, 2, 3, 2 raised to 3. There are 8 subset exist, and last one, null set. Null set, which is a subset of null set itself. Null set and set itself both are same. That means only one subset exists, which is null set. Solution. One more question. થોડોક ટ્રિપિકલ ક્વેશ્ચન છે, બરાબર? એ ની અંદર જો હું ફરી વખત ક્વેશ્ચન લખું છું કે in the set A, null set, singleton set, null set 1, set 1, 5 and 2. How many members? 1, 2, 3, 4, 5. 5 members are there. First, member belongs to set. Member belongs to set. Member belongs to set. Member belongs to set.
and member belongs to set. આવું હું ફરી વખત કેમ રિપીટ કરું છું? તમને યાદ આવે, મેમ્બર બિલોંગ્સ ટુ સેટ, સેટ સબસેટ સેટ, મેમ્બર બિલોંગ્સ ટુ સેટ, સેટ સબસેટ સેટ. આવું 2-5 વાર બોલશો એટલે ખબર પડશે તમને, રાઈટ? હવે આપણે થોડું ચેક કરીએ. null set is null set is belongs to A. Null set which is part of capital A, that means first one is true. Set A and subset, this is member and this is set. Member and set, which sign? Belongs to sign, that means this is fifth one is wrong. 1 in the curly bracket 1 belongs to A. Check the curly bracket belongs to A. Curly bracket 1, that means this whole is as a member or element. Check, curly bracket 1 is present in capital A? No. 1 is present, that means 1 belongs to A. But curly bracket 1 which is not present, that's why this is false. Second, 2 and null set, both are part of capital A. Null set is present, yes. 2 is present, yes. That means this is set. Set and set, there are subset sign, yes. That means this is true. Seventh one, this is true or false? Check. In the curly bracket, this is element. This is 2 element is not subset of capital A. That means this statement is true. ક્વેશ્ચન માં એવું કહે છે કે કર્લી બ્રેકેટ ની અંદર કર્લી બ્રેકેટમાં 2 અને કર્લી બ્રેકેટમાં 1 આ બંને કેપિટલ A ના સબસેટ નથી. આ તો વાત સાચી. કેમ? કેમ કે આ બંને એલિમેન્ટ કેપિટલ A માં નથી. This 2 elements is not part of capital A. That's why this set is not subset of capital A. That means this statement is correct. Next, we discuss interval. I already told you infinite set represent in terms of interval. Infinite set represent in terms of interval. The word interval. Right? Interval. There are mainly 2 interval. Close interval and open interval. In close interval and open interval. Close interval A comma B and open interval A comma B. The meaning of interval, there are infinitely many points in between these 2 points A and B. Suppose this is A point, any point A, and this is any point B. There are infinitely solution, infinitely real number. There are infinitely real number exist in between A and B. The meaning of close interval, that means A is included, B is also included. Interval, that means infinite number present, and interval, close interval A comma B.
convert into this interval in inequality form. Convert interval into inequality form. That means capital A, small a less than or equals to x, less than or equals to b. इंटरवल दिया हुआ है a to b, राइट? इसको क्या बोल सकते हैं हम? क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल a to b, that means a and b both are included. x की जो भी वैल्यू है वो इन बिटवीन a to b है, और a और b दोनों को कंसीडर करना है. और यहाँ पे जो x है वो क्या है? रियल वैल्यू है. सेम थिंग हियर, but a and b are excluded. That means this number is not considered. A and b convert into this interval into inequality form. That means x lies in a to b, but here a and b are excluded. x belongs to r. x की जो भी वैल्यू है वो रियल है, और a और b के बीच में से लेनी है. a और b इंक्लूडेड नहीं है, राइट? एग्जाम्पल आप देख लीजिए. सपोज इंटरवल 1 and 2. The meaning of close interval 1 and 2. I draw a real line. This is 1 and this is 2. In between 1 and 2 there are many points exist. There are so many points, infinitely point. 1, 2, 3, 4, infinite point. There are infinite points. That means 1 and 2, x lies between. Suppose you given that x is belongs to interval 1 and 2. Interval 1 and 2. तो आप क्या करोगे? x का इंटरवल है उसको आप इनइक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. तो 1 क्या है? एक्सक्लूडेड है और इंक्लूडेड है. यहाँ पे ये जो साइन है, राइट, बॉक्स है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है उसका मीनिंग है इंक्लूड करना है. तो मैं लिख दूंगा 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2. सपोज यू गिवन दैट ओपन इंटरवल 1 and 2. द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल 1 and 2 मीन्स 1 and 2 क्या है? एक्सक्लूडेड है. 1 and 2 आर नॉट कंसिडर्ड. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन 1 and 2, but 1 and 2 are excluded, right? We discuss about two intervals. Same thing, there are also again two more interval is exist. Open close interval and close open interval. Third one is open close. And fourth one is close open interval. Open close, that means first one is open, A, and B1 is close. Inequality form of open close interval is equals to, इसमें आप कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? a की वैल्यू जो है वो एक्सक्लूडेड है. दैट मीन्स a लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू b. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड करना है. यहाँ पे क्लोज ओपन है तो सेम थिंग क्लोज और ओपन. तो इसको आप इनइक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? a लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन b. b है वो एक्सक्लूडेड है. क्लियर? देख लीजिए आप. ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है. जहां पर भी इनफाइनाइट साइन आती है वहां पे कंपलसरी ओपन इंटरवल आएगा. आई रिपीट, इनफाइनाइट
की साइन जहां पर आएगी वहां पे कंपल्सरी ओपन इंटरवल आएगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट की साइन है और वहां पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। ऑलवेज इन द इनफाइनाइट साइन कंपल्सरी ओपन इंटरवल आर एग्जिस्ट, राइट। सेट आर, तो सेट आर है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। रियल नंबर इज डिफाइंड माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। The positive integer, that means 0 to infinite, when both are open. I repeat, positive real value, not positive integer, positive real value defined by 0 to infinite. 0 to infinite. Okay. Sixth question. In the sixth question, राइट इन टर्म्स ऑफ इंटरवल। इंटरवल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट, x बिलोंग्स टू r, कौन सा इंटरवल दिया हुआ है चेक कीजिए, ओपन क्लोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स टू की साइन है, तो मैं लिख दूंगा -4,6। बट ओपन क्लोज, ओपन और क्लोज, ये ओपन और ये क्लोज। नेक्स्ट वन, x बिलोंग्स टू r, -12 लेस देन x माइनस लेस देन -10, बोथ आर ओपन, दैट मीन्स ओपन इंटरवल -12 to -10। नेक्स्ट वन इज ओपन क्लोज, सॉरी क्लोज ओपन, 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और लेस देन 7, दैट मीन्स क्लोज 0 to 7 open. And the last one is close interval 3,4, last which is 3,4। सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। सेवेंथ वन, इंटरवल को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इंटरवल को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक दो को मैं आप चेक कीजिए आंसर, मैं करता हूं। ओपन इंटरवल 6,12, क्लोज इंटरवल x वेर x बिलोंग्स टू r, रियल वैल्यू होनी चाहिए, और x लाइज बिटवीन 6 to 12, 6 विच इज एक्सक्लूडेड, 6 लेस देन x लेस देन और इक्वल्स टू 12। क्लियर? यहां पे दिया हुआ है 6,12, x where x belongs to capital R and 6 less than or equals to x less than or equals to 12. Why? Both are close. That means 6 is also included, 12 is also included. See the solution. One more important set, it's known as power set. First definition, first we see the definition of power set. A set which is collection of, a set which is collection of all the subset of any set A is known as power set of capital A, which is denoted by P of A. Power set of A, which is denoted by P of A. I repeat, a set which is collection of
all the subset of capital A, which is known as power set. सबसे पहले डेफिनेशन रीड कीजिए. पावर सेट क्या है? अ पावर सेट, अ सेट which is collection of all the subset of set, all the subset of set which is known as power set of A and denoted by P of A. Write down this definition. Okay, I give you one example which is better understanding for you. Suppose I have A is equals to set 1 and A. Set A is equals to 1 and A. The definition says subset of, total subset of set, total subset. Null set, set itself, singleton set 1 and singleton set A. The collection of all the subset, ये क्या है? हमारा कलेक्शन है, ये हमारा एलिमेंट्स है, उसका सेट निकाल दोगे तो वो आपका पावर सेट आ जाएगा. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं P of capital A. That means power set of set A is equals to पावर सेट ऑफ ए. यहां पे मैं लिख दूंगा पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये हमारा मेंबर है, उसको कर्ली ब्रैकेट में हम पुट करेंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे, विच इज अवर सेट. नल सेट ए, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट ए एंड कर्ली ब्रैकेट ओवर. Read the definition again. Collection of subset of set A. A का मैंने सबसेट निकाल दिया, 1 और A दो मेंबर है, तो 2 raised to 2, that means 4 members are exist. Null set, set itself, singleton set 1, singleton set A. जो 4 members है उसको कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दो, कॉमा से सेपरेट कर दो, which is our power set. Clear? One more example. Singleton set, sorry, A is equals to 1, A, 2. There are 3 members. How many subset are exist? 8. 2 raised to 3, that means 8. First one is null set, set itself, singleton set 1, singleton set A, singleton set 2. Next, pair of 2, 1 and A, second one is A2 and 1, 2. There are 8 members, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये 8 members है, उसको मैंने क्या करना है अभी? कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दो. कर्ली ब्रैकेट में पुट कर दिया तो ये अब क्या बन गया? सेट. तो इसी को हम पावर सेट बोलेंगे. यही हमारा क्या है? P of A है. राइट? राइट डाउन वन मोर नोट. इफ एनी सेट A has n members or n elements, then number of element of power set A. I repeat, if set A has n elements, then number of power set of set A is equals to 2 raised to n. Because if A has 3 members, then power set of A has 8 members. Ultimately 2 raised to n, 2 raised to 3. Therefore power set में कितने members आएंगे? तो A का जितना भी सबसेट होगा वो सभी के सभी पावर सेट में आएगा. राइट? तो 2 raised to n, which is total number of
एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए। डेफिनेशन, और पावर सेट है वो कभी नल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इफ नल सेट इज एग्जिस्ट देन वन एलिमेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। विच वन? इफ नल सेट, therefore subset of null set is also null set, and put in the curly bracket, that means this is singleton set. so null power set है वो कभी भी null set नहीं आएगा। और ये जो मैंने डेफिनेशन दी हुई है कि इफ नंबर ऑफ ए में के मेंबर्स है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट, इसको क्या रीड कर सकते हैं? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 k। राइट, मैंने जो नोट लिखा है उसमें 2n है, क्योंकि मैंने बोला था ए में n मेंबर्स है। यहाँ पे कितने मेंबर्स है? यहाँ पे k मेंबर्स है, यहाँ पे 2 k आएगा। तो 2n 2k बोथ आर सेम। राइट, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार आप। लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूं। नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द नंबर ऑफ पावर ऑफ ए। ए फाइंड करना है। बराबर, ઘણાને એવું થશે કે આમાં પી ગણવા કે બ્રેકેટ ગણવા, એ કાંઈ ગણવાનું નથી આપણે, શાંતિથી ક્વેશ્ચન જેમ આપેલો છે એ પ્રમાણે સોલ્વ કરવાનો છે। બરાબર, આવા ક્વેશ્ચન સામે આવે ને એટલે બહુ ગભરાવાનું નહીં, શાંતિથી સોલ્વ કરવાનો। બરાબર, જનરલી આવા ક્વેશ્ચન પૂછાય તો શાંતિથી સોલ્વ કરવાનું। કેવી રીતે સોલ્વ કરવાનું હું સમજાવું। ફર્સ્ટ, if number of a equals to 1, number of a equals to 1, then number of power set of a equals to, તો a ની અંદર 1 મેમ્બર છે, તો પાવર સેટ ઓફ a એમાં કેટલા મેમ્બર હશે? કોઈ પણ સેટ ની અંદર એક છે એલિમેન્ટ 1 મેમ્બર છે, તો પાવર સેટમાં કેટલા મેમ્બર હોય? તો કે એના સબસેટ કેટલા છે એટલા। તો આના સબસેટ ટોટલ થશે કેટલા? 2 1। that means power set of A has 2 element. I repeat, power set of A has 2 element. How? 2 to 1, 2 to 1, that means this power set of A has 2 element. Now this is one set, has already 2 members. इसका भी आपको पावर निकालना है, पावर सेट निकालना है। ये जो सेट है उसमें ऑलरेडी 2 मेंबर्स है, उसका आपको पावर सेट निकालना है। तो 2 मेंबर्स है, उसका पावर सेट निकालोगे तो इसमें कितने मेंबर्स आएंगे? 2 दैट मीन्स 4। यहां तक समझ में आ गया? अभी ये सेट हो गया। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? There are 4 members. There are 4 members exist and उसका आपको पावर सेट निकालना है। देख लो यहाँ पे पावर सेट दिया हुआ है, तो उसका पावर सेट निकालोगे तो हाउ मेनी? 2 to 4, कितना आ जाएगा? 16, विच इज माई आंसर। क्योंकि यहाँ पे नंबर ही लिखा हुआ है इसलिए मैंने नंबर ही कैलकुलेट किया। अदरवाइज पावर सेट दैट मीन्स दिस इज अ सेट, नॉट अ नंबर, दिस इज अ सेट। पर मेरे को पता है कि यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली नंबर ही फाइंड करना है। दैट्स व्हाई आई रोट ओनली 2। क्लियर? आई रिपीट, सेट A हैज ओनली 1 मेंबर, 1। उसका आप पावर सेट निकालोगे तो देयर आर 2 मेंबर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ 2 which is formula 2 which equals to 2। अब ये एक सेट बन गया which is contain 2 elements। उसका आपको पावर सेट निकालना है, 2 मेंबर्स है, तो which is 2 equals to 4। अब ये 2p का कैलकुलेशन कर दिया हमने।
अभी एक सेट बन गया, उसमें कितने मेंबर्स है? देर आर 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स है, उसका आपको पावर सेट निकालना है, उसमें कितने मेंबर्स हैं वो पूछ रहा है, तो 2 to 16, राइट। अभी एक और काम करता हूं मैं, अभी एक और p ऐड कर देता हूं और आगे n लिख देता हूं, तो अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, देर आर 16 एलिमेंट्स एग्जिस्ट, 2 to 16 विच इज माई आंसर। इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, 2 to 16 विच इज माई आंसर, दैट्स इट। अभी आप इसको भी कर सकते हो कैलकुलेट, क्योंकि ये नल सेट है, तो नल सेट है तो उसमें कितने मेंबर्स आएंगे? 0 मेंबर, तो 2 to 0, दैट मीन्स इसमें कितने मेंबर्स आ जाएंगे? 1 मेंबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 to 1। कैलकुलेट करोगे आंसर आपको मिलेगा 2 to 5। दिस इज माई फाइनल आंसर 32, राइट। यूनिवर्सल सेट, what is a universal set? Universal set, first read the last 2 or 3 lines. 2 or 3 lines. If even set, if set of all the even set and integer, एग्जाम्पल में देता हूं, सपोज a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अभी इस दोनों का यूनिवर्सल सेट आपको फाइंड करना है, तो ये दोनों के दोनों मेंबर किसी एक सेट का सबसेट होना चाहिए। यू मैं कंसिडर कर सकता हूं, जनरली यूनिवर्सल सेट को नोटेशन दिया हुआ है कैपिटल यू, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 अप टू 10। तो आप चेक करो, ए का जो भी मेंबर है 1 2 3 4 वो यू का सबसेट है, और 1 2 3 4 5 वो भी यू का सबसेट है, राइट। तो अभी मैं ये यू है उसको मैं कैपिटल डी सपोज कर लेता हूं, तो अभी इस तीनों का ए बी और डी का यूनिवर्सल सेट मेरे को फाइंड करना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 अप टू 20। अल्टीमेटली क्या करना है, जो भी सेट दिया हुआ है वो सभी के सभी सेट का एलिमेंट्स किसी एक सेट में आना चाहिए, विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। लाइक दैट a is equals to 1 2 3 4, b is equals to 1 2 3 4 5, d equals to 1 to 10. That means we have to find out one set which is convert into this all three set equals to 1 2 3 4 up to 20. That means this is my universal set. Today we discuss about the subset, power set, its application, and last one is universal set. In the homework, first compulsory you write theory of subset and power set and its application, and discuss about 10th, 9th, 10th and 11 and its extra questions 9.1, 10.1, 11.1, and also we discuss exercise 1.3. Thank you.